So this is your term 1 question paper shared by CBSE. Maximum marks 35, time allowed 90 minutes, that is 1 hour 30 minutes. So class 12th informatics practices, code is 065. The paper is divided into 3 sections A, B, C. Section A consists of question number 1 to 25 and student need to attempt 20 questions. Section B consists of question number 26 to 49 and student need to attempt 20 questions. Section C consists of question number 50 to 55 and student need to attempt 5 questions. All questions carry equal marks. Now let us see. Section A consists of 25 questions, attempt any 20 questions. The name pandas is derived from the term, the option will be given to you. Answer is A, panel data. Question number 2, the command to install the pandas is. You all know pip install pandas, so D option is correct. Pip install pandas. Next, question number 3, Python pandas was developed by. Now, pandas is developed by Wes McKinney, that is option C you will select here. Next, pandas series is. Already you know one dimensional, series is one dimensional, data frame is two dimensional. So, answer will be C, one dimensional. Pandas is a library. So, this also you know it is a library of Python. So, C option, library is correct. We can analyze the data in pandas with, now here with series with data frame. So, pandas we are using for data analysis. Now, using series also we are doing it. Using data frame also you are doing it. So, C option, that is both of the above, using series as well as data frame, both are the two types of pandas. So, you will write both of the above. Out of the following, which function cannot be used for customization of charts in Python? Now, when we are designing the Python, we are writing PLT or suppose the alias name is PLT, then PLT.xlabel, PLT.title, PLT.xtext. Color we are not using as function. So, color is in attribute we were using it, but it is not a function. So, here B is your correct option, that is color. That is, color is wrong. It is given here cannot be used for customization of chart. So, it is not a function. So, it cannot be used. Now, 8th question is, what is the maximum number of arguments required for plot function in matplotlib? Now, in matplotlib, when you are plotting it, what is the minimum number of arguments? So, minimum you have to give one value, otherwise it will not work. The other it can take is by default. So, here minimum will be 1. So, A option 1 you have to give. Like suppose I can give here the dictionary I can give in which both are there, or any one variable you can give here. So, one argument is compulsory. This we will check once. Plot we will use and we will check it also. Next, method or function to add a new row in a data frame is. Now, LOC we already have done. We were adding a new row using LOC, and for adding a new column we were using in square bracket the name of the column and we were adding a new column. So, here A option .loc will be used. 10th, dash is the function to save the graph. Now, this we have already done. Savefig we were using to saving the graph. Now, A option savefig is the correct answer. Next, question number 11. A dash is a unique data trace of a user's activities, actions, communications or transaction in digital media. In digital media, whatever we are doing, it is saved and it is called digital footprints. So, digital footprint, with that anybody can see previously in history what works we have done. So, that is called digital footprint. So, B is the correct option.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? Data theft is cyber crime, forgery of online documents, cyber crime, damage to data and system, cyber crime, installing antivirus for protection, it is anybody can do it. So D option, installing antivirus software, that is your for protection. So this is not a type of cyber crime. Next, FOSS, free open source software. So F stands for free. So A option is correct. Which of the following import statement is not correct? So which you cannot use. Now here you can see pandas, import pandas as identifier name. Now identifier names cannot start with a digit. It can start with underscore or a alphabet, but it cannot start with a digit. So B is wrong. B you cannot write. Rest 3 are correct. You can use any of these. So not correct, you will write B option. B is not correct because this alias name cannot start with a, it is identified, cannot start with a digit. Next, 15. IPR stands for intellectual property rights. Intellectual property rights is C option. So C option is correct. Next, which of the following is not a violation of IPR? So out of these, which is not? Plagiarism is a violation, copyright infringement by a patent is not a violation, trademark infringement. So here C option, patent, that is not a violation. Rest 3 are violations. Now this is your term 1 paper, and in term 1 paper you can see these questions are from networking. Okay, cyber security. Yes, cyber security is coming in term 1. So these topics, these questions are from your cyber security or society law. From that chapter it is asked. So okay, while accessing the column from the data frame, we can specify the column name. In case column does not exist, which type of error it will raise? Now columns, here key error it is, because normally you have seen that if the row does not exist, column does not, so key error it is showing. Syntax is typing mistake if you are giving, then it is syntax. While running, if there is any error, runtime. So you will write A option, that is key error. Next, dash is the practice of taking someone else. This I have already told you, in every paper plagiarism is asked. So A option, plagiarism, this will be asked. One word हो या फिर fill in the blanks हो, MCQ हो, दूसरे का जो भी काम है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके अपना नाम दे देना, प्लेजरिज्म कहलाता है. ऑप्शंस यहाँ पे आंसर्स ऑल्सो CBSE हैज शेयर्ड विथ यू. सो दीज आंसर्स यू कैन चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट. If it is wrong, then we will discuss on those answers also. So here plagiarism, 18th one. Function to display the first n row in the data frame. ये तो पता ही है तुम लोग को. B option है head n. So तुम लोग you also should participate. तुम लोग को जो जो आता है आंसर बोलते जाओ और क्यों हो रहा है वो भी बोलते जाओ. Following are the impact of e-waste on the environment. Choose the odd one out. जो गलत है उसको निकालना. E-waste, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम यहाँ वहाँ फेंकेंगे. सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. हाँ, साउंड पोल्यूशन नहीं है, तो ऑड वन इसमें कौन सा हुआ? डी हुआ, साउंड पोल्यूशन. बाकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ऐसी बाहर डस्टबिन में या कहीं पे फेंक देंगे तो उससे तुम्हारा एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन होता है. तो इसमें डी ऑप्शन लिखोगे, साउंड पोल्यूशन. 21. Abdul deleted all his chats from all his social media accounts and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in doing so? No. जो भी हम काम करते हैं ऑनलाइन वो सब फुटप्रिंट्स हिस्ट्री में हमारा, चाहे मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूँ तो भी हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स में सब कुछ सेव हो जाता है. कभी भी जैसे साइबर क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, उसके बाद
पूरा डिजिटल फ्री, इवन जो हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे, जो मैसेज कर रहे हैं, चैट्स, एवरीथिंग इज स्टोर्ड वेन एवर एनी केस इज देयर। जैसे बीच में जो जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, सीबीआई है, बहुत सारे केसेस अभी जो बीच में हुए थे, उसमें सपोज एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि सपोज सुशांत सिंह राजपूत केस जो हुआ था, सीबीआई ने पूरे पुराने जितने चैट्स थे, पूरे लिंक्स, कि हाँ उसके साथ कौन रहते थे, उन्होंने किससे बात की, क्या टॉपिक पे बात हुआ, अगर ड्रग्स रिलेटेड बात हुआ तो किससे बात हुआ, क्या ट्रांजैक्शंस हुए, किसने किसको पैसे दिए, पूरा एक एक मैसेज पूरा सेव हो जाता है। तो हमने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, क्रिमिनल ने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, लेकिन वो पूरा डिजिटल फुटप्रिंट्स में रिकॉर्ड हो गया। कभी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो आराम से चेक कर सकता है कि क्या टॉक्स हुए, क्या मैसेज हुआ, क्या चैट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। The legal and regulatory aspects of the internet refers to IT Act हम लोग पढ़ चुके हैं। सारे जितने भी लीगल हम लोग का जो भी लॉज है, सब हमने IT एक्ट हमारा जो है 2000 में जो बना था, 2008 में अमेंडमेंट हुआ था, तो IT एक्ट में सब कुछ डला हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, Pandas data frame cannot be created using, डेटा फ्रेम बनाते समय हम क्या क्या, डिक्शनरी ऑफ टपल, सीरीज, डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी नहीं हो सकता है। तो डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा डी? क्योंकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मीन्स उसमें बहुत सारी डिक्शनरीज है एक लिस्ट में, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंक्शन विल बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल इनटू पांडास डेटा फ्रेम? पांडास डेटा फ्रेम ये ऑलरेडी रीड अंडरस्कोर CSV, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तुम लोग प्रोजेक्ट में भी यूज कर चुके हो। रीड अंडरस्कोर CSV फाइल से पढ़ने के लिए हम यूज करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम? पांडास डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हम लोग सब किए थे, तो उसमें टी हमने किया है, साइज और शेप किया है। लेंथ जो है वो उसका एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए लिखोगे लेंथ। एट्रीब्यूट्स मैंने बोला ही था, एट्रीब्यूट्स के एक पेज में लिख लेना पूरा, क्योंकि उसमें से आएगा ही पांडास डेटा फ्रेम के सारे एट्रीब्यूट्स, जो एक टेबल दिया हुआ है NCERT बुक में। ठीक है, ये देखो सारे क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है सारे NCERT बुक के क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलो।